and IUCT in general, and the director of IUCT, in particular, Professor Arbind, who gave me this opportunity to get connected the teacher educators from 10 states of India, right? And I don't like to miss this opportunity because this is the occasion when you have not only the occasion to get connected with the people, but also to showcase and share your understanding. One thing is very clear, the topic is not mine. These are the two topics which have been given to me, and I'm supposed to deliver my understanding to each one. Nothing is exceptional I'm going to talk, but what I'm going to do is, whatever understanding I have formed on the basis of my almost 25 to 26 years of teaching experience, plus other experiences, administrative experience. So the first topic that has been assigned to me is contextualizing the global higher education in Indian scenario. Right? And in the second part, so ma'am, when this session will end? Fine. So 15 minutes break will take? And then the second session. Yeah. So, well, I would like to thank ma'am also who introduced me to each one of you. We all are, from the same community, right? So that's also, one of the goals to, how do I say, that whenever such occasions come in your life, don't miss this opportunity. I would like to quote here Francis Bacon. You must have read Francis Bacon, particularly those who belong to the language, science discipline, and the logic discipline. He says that if you want to become a ready man, you must attend seminar, conferences, and workshops. Right? Because that gives you an opportunity how to prepare yourself. Like when I was planning to come here, I was not sure who will be the audience, right? And in the end, my sound is not coming? Yes. Oh, I'm so sorry. Now it's okay? No? Close. Okay. Can you increase volume? Okay. It's maximum. Fine. This maximum. Fine. So hope now you are getting my voice. Yes. Right. I'm so sorry. And then he says, so it's not only for professional development, but your own development, that whenever you get an opportunity to attend seminar, conferences, workshops, either as a participant or as a resource person, you must attend. If it doesn't give you anything, at least it will give you the readiness. The readiness in the sense that what you are going to share, and forget about that, the kind of questions that you will get, because the questions are very important part of one's growth. Then further he says, if you want to become an exact man, you must write every day. So readiness comes with this kind of interaction. Exactness comes with writing. But most important thing, which is very true for all teachers, across the discipline, across the geographical boundaries, and that is, if you want to make yourself a full man, you must read. पूर्ण मानव बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पढ़ें. सवाल उठता है शिक्षक क्या पढ़े? I have been told that the population is the mixed one. Am I right? No? Hindi and English. Everybody can understand Hindi? Right. So पूर्ण मानव बनने के लिए क्या करें?
ठीक है, फ्रांसिस बेकन कहता है कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन एक शिक्षक क्या पढ़े? वो जो जिस सिलेबस को उसको पढ़ना है, पढ़ाना है, या कुछ और, वो कौन बताएगा? आप कहेंगे कि गूगल बाबा के पास सब कुछ है, बिल्कुल। इतनी इंफॉर्मेशन है कि हमारी लाइफ बहुत कम है उन तमाम इंफॉर्मेशन से रूबरू होने का, समझने की तो बात छोड़ दीजिए। नहीं, on such occasions, whosoever comes here, stand here, share with you, he or she would like to share some amount of information which is very, very relevant to your profession, your professional growth, and more importantly, your personal growth. Right, friends? Now, I was wondering that this is for teacher education, this institution, like she asked that what is the purpose of this? Orienting people, refreshing people, right? Or helping people to shape the professional identity. As Professor P.N. Singh said, they are the secondary goals. The primary goal is to have meaningful engagement and meaningful interactions. Now I don't know, like since last more than 12 years, what kind of activities are going on in academic arena in Haryana, though my colleague is sitting in front of me. But I don't know why, because I had hardly chance to interact with the people who are engaged in the field of teacher education, particularly in the region of Haryana. Might be what is going on in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. Though I shifted my base from Himachal to Maharashtra, Maharashtra to Uttar Pradesh, and Uttar Pradesh to now Delhi. But still, only 4 states I could see. The rest of 24 states I don't know. So such opportunity will give you a chance to rethink what you are doing and how the thing should go about. This is one thing. Secondly, I was really wondering that in an institute which is dedicated for the cause of teacher education, why they have chosen the topic higher education. Is there anybody who would like to respond? Why teacher education institutions should concentrate on understanding of the phenomenon called higher education in India and the world? Anybody would like to respond? Anybody would like to respond? मेरा प्रश्न है कि वो संस्था जो अध्यापक शिक्षा के लिए समर्पित है, वो संस्था उच्च शिक्षा के बारे में क्यों सोचे? Anybody would like to share anything? Because it is related to research and research. Okay. First response that I am getting. What's your good name, sir? So Dr. Ranjit Bharti. बैठे नहीं, please खड़े नहीं होंगे आप. Dr. Ranjit Bharti. So according to Dr. Ranjit Bharti, this is related with higher education. That's why we should discuss about higher education. Anybody else? Sir, emerging challenges of higher education. That is Okay, what's your good name, please? Dr. Om Prakash. According to Om Prakash, the emerging challenges that higher education is facing, and that's why all people, irrespective of their disciplinary orientation, should think about higher education challenges. Okay, anybody else would like to share anything? To keep teachers updated Keep about emerging new concepts in the field of in the higher field of education. education. Okay, fine. Anybody else? Anybody else? Teacher, so this program shows the pedagogy aspect. Okay. No, my question is, भाई मैं तो प्रोफेसर एजुकेशन का हूँ ना, नहीं? तो मुझे हायर एजुकेशन क्यों पढ़ना चाहिए और हायर एजुकेशन क्यों समझना चाहिए? सर, जी. एजुकेशन के लिए यूजी और पीजी वाले बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हम्म. तो हमको जब हायर एजुकेशन पता रहेगा, हम हम्म. उनको बताएंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे. और ठीक. ऐसे पता नहीं है बीएड क्यों स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच में झगड़ा का मुद्दा है. जी मैम. Yes ma'am. I'm Shubhrit from New. I have No problem. Absolutely no problem. Please go. this our with the new education, the national education, policy. We are becoming more holistic. Mm-hmm. So in higher education, this holistic attitude is necessary.
Okay. So this is So not- holism is required and holistic perspective is necessary on the part of every teacher, irrespective of the level he or she is engaged with. Fine, ma'am. Anybody else would like to share? See, I'll not say anybody is wrong. No, everybody is right. But see, the different answers are coming. What is the reason? The reason is, the answer to this question is a perceptual answer. The way you perceive a particular phenomena, and that kind of answers will completely come. Many people ask me this question. I have given a reflection on that. Primarily, आपसे पूछा जाए, आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं? देखिए, इकोनॉमिक्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है. जो लोग इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के हैं, वो समझते होंगे. किस सेक्टर में हम नौकरी करते हैं? तो सेक्टर हायर एजुकेशन का है. हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टीचर एजुकेटर होंगे, कुछ लॉयर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ सिर्फ सोशोलॉजिस्ट होंगे, कुछ साइकोलॉजिस्ट होंगे. लेकिन सेक्टर कौन है जिस सेक्टर में आप नौकरी करते हैं? वो सेक्टर है हायर एजुकेशन. In addition to all my worthy colleagues, whatever they have said, in addition to that, the most pragmatic answer that is coming to my mind is that I should be aware of what is happening in the sector in which I am rendering my service. This is the one thing. Secondly, why should I know? I am a teacher educator. Or from the pedagogic perspective, if you ask me, I have done my first master in mathematics and second master, as you all might have done, in education, isn't it? So I'm a mathematics pedagogue. What the hell, why I should know what is happening in the field of higher education? One answer was given that the undergraduate and postgraduate students also come. Right? It's not only the people who are studying education or pedagogy of mathematics in a particular institution. I'm concerned with that. What is happening in mathematics throughout the world? For example, recently I was interacting with mathematics professors from different parts of the country. I was supposed to talk the epistemological and ontological dimension of mathematics. Is there anybody who teach mathematics pedagogy? Is there anybody? Anybody? And the moment I utter this topic, everybody was saying, who is this alien person? ये क्या बोल रहा है? You know why? Simply because such things don't figure in the syllabus and curriculum of mathematics in India. But the case is not the same in other parts of the world. It could be the European institution, it could be the American institution, it could be African institution, or it could be any other institution. So I asked her, ma'am, what's your specialization? And she simply said, optimization. When I was a student at the master level, such specializations were not there. Like I had two specializations at the mathematics level. One I had, there were so many options, but I decided differential geometry and functional analysis. Today people don't study that. I remember when for the first time I was introduced to the concept of matrix, and I asked my teacher, did you study matrix when you were the students? And my teacher said no, because that was not in the syllabus. So being a teacher educator, it's my prime responsibility not only to know what is happening in the field of education in general, all over the world, higher education in particular, and more specifically, what is happening in the field of teacher education in the world. For example, when I had the opportunity as a Fulbrighter to make a visit to University of Elan in US, I was surprised to see that most of the teachers who were teaching in the Department of Education, particularly the mathematics, they had no BA qualification. So there was a collaboration between the Department of Education and Department of Mathematics. So to deliberate on the particular content, right, mathematics professors used to invite, and sitting with the pedagogue teacher, they used to
devise certain strategies. Unfortunately, in India, that doesn't happen. Isn't it? See, ITEP is going to be started. You ask the same content teachers, teach mathematical content at the undergraduate level. I don't think hardly there are 1% in India, including myself, because as I said, I have done my master in mathematics, I'm competent to teach mathematical content at the undergraduate level. Yesterday only, I was sitting in one of the boards to select professor in education. I was interviewing and I asked one gentleman, he had 3 master's degrees. And then only one question, I said, you choose the subject and I'll ask you. He said, sir, please ask questions in the field of political science. Now, I have nothing to do with the political science. But being an expert, now this is what the challenge he posed in front of me. I don't know whether he was aware of my background or not, but he posed a question to me, sir, please choose. I have chosen political science. He had first master in political science, second in English language and literature, and third, experimental psychology. He deliberately chose political science, neither the English language and literature, nor experimental psychology. Now tell me, as an expert, what is my roles and responsibility? It was sufficient for me to say, oh, I don't belong to the discipline of political science, so I'll not ask you a question this. You answer the question I'm asking. But no, that's not the correct one. I always believe in any interview system, you ask the person what he or she knows the things at depth. Why do you ask a question which he or she doesn't know? But this is what in interview committee or interview room happens throughout India, isn't it? So I asked him one very simple question. Is there anybody who belongs to the discipline of political science? 1, 2, 3, okay? Okay, fine. So I suppose you must be at this level, either at the assistant level or associate level. You all will appear for the professor level. Maybe I'll be there sitting as an expert. I simply asked him a question. That the ultimate goal of a democratic system is to provide justice. He said yes. I said, you tell me, you give me the name of 2 books related to justice, which I want to understand at a deeper level. And he was kept mum. I gave him a hint. I told him some names also, but even that he could not recall. Now tell me, what is the use of a master degree, and that too in 3 disciplines? I don't understand. Because I believe that 1 master degree is just sufficient to understand any academic discourse. It's sufficient enough. And I have not only theoretical example, but the practical example before me. Like one of my students in RDS College of Education, Rewari, he had a master in English. He started teaching independently. He appeared for the interview, but unfortunately, he could not get success. So one day he met me and he says, so what should I do? I said, if you believe in your ability, why don't you start teaching yourself? And now he is one of the, what should I say? The amount of money I earn in a year, he earns in a month. And when he started teaching, he realized that English knowledge is not sufficient to hold the students in a particular institution. And one day he came and he said, sir, I want to do master in mathematics. I said, you haven't studied mathematics at the undergraduate level. How can you do that? He said, sir, I do. He just helped me out. Believe me or not, later on he completed his master degree in mathematics.
And today, he is giving tuition to both the students, those who come for the English and those who come from the mathematics. So out of that phenomena, my understanding has got solidified that one master degree is sufficient to understand any amount of knowledge in any discipline. Well, friends, so let me summarize. Since we belong to the sector, profession-wise and job-wise, higher education, so it's our moral responsibility to understand what higher education is all about and what are the things that are going on not only in India but throughout the world. And perhaps that could be one of the reasons, I don't know, they are the organizers, they might be doing it better, that they might have thought that our educators must understand what higher education is all about and how to contextualize those things in Indian scenario. For example, why the things that are taking place in University of Elan in US, the similar kind of things are not happening in India. We have mathematics professors, we have education department at the college level or the university level, but still that interaction is not there. Why is it so? I don't want to copy the American system, but at least we need to have the deliberation, discussion, and fruitful interaction among ourselves. But why it is not happening? Why a political scientist is not invited in a college of education to share his or her understanding of education as a political phenomenon? Despite the fact we all will agree, education is largely a political discourse where power plays a very, very vital and important role. हुआ क्या है? हुआ ये है कि हम लोगों को आदत पड़ गई है कि गिवन में विश्वास करना और उस गिवन को करना। जो चीज दे दिया गया है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और वैसा ही करते हैं। मेरे साथ 2 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक मेरा जूनियर ने भी ज्वाइन किया, एसोसिएट प्रोफेसर है वो। हम 3 लोग हम लोगों ने ज्वाइन किया स्कूल ऑफ एजुकेशन के लिए। तो वो कभी कभी अपनी बातों को शेयर करने आ जाता है। अब चूंकि मैं उसका सीनियर हूँ तो जीवन भर में उसका सीनियर ही हूँ। वो अरविंद सर ही कहेगा। उसने कहा कि तो मैंने कहा कि अजय तुम ये बताओ, उसका नाम है डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ही इज एसोसिएट प्रोफेसर नाउ। बिफोर ज्वाइनिंग इग्नू न्यू दिल्ली, ही वाज ए प्रोफेसर इन टिस मुंबई। Now he is joined as an associate professor in School of Education. मैंने कहा जब तुम बीएड करने आए और बीएड करने के बाद तुमको क्या लगा, ऐसा क्या था उस बीएड कोर्स में जिससे तुम एक बेटर टीचर हो गए, या तुम टीचर के लायक नहीं थे, टीचर हो गए? ईमानदारी से हम सब आपस में पूछिए, अगर कानून हटा दिया जाए 1 मिनट में तो हिंदुस्तान के जितने लोग, हम सब में से ज्यादातर लोगों ने बीएड किया होगा, कितने लोग बीएड करेंगे? कल किसी से मैंने पूछा उस इंटरव्यू बोर्ड में कि तुम्हारा स्पेशलाइजेशन क्या है, किस में रिसर्च करना पसंद करते? तो कहा टीचर एजुकेशन। मैंने कहा आज बताओ कि आज भारत में जो बीएड करने की व्यवस्था है वो किस समय शुरुआत हुई थी उसकी? हम सब बीएड कॉलेज में पढ़ाते हैं या बीएड डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, बताइए। और क्यों हुई थी? Are you getting my question? हाँ, कब शुरुआत हुई थी और क्यों हुई थी? हम सब कॉन्शियस हैं, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस हमारे पास है नहीं? भारत की सभ्यता और भारत का इतिहास इतना प्राचीन है, उसकी गहराई अथाह है जिसको थाहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम जिस प्रोफेशन में हैं, जिसने हमें प्रोफेशनल आइडेंटिटी दिया, उसकी हिस्ट्री नहीं है। Why is it so? ये सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? आप अपने आप से पूछ के देखिए। आपने पूछा था ना कि इसकी क्या जरूरत है, यही जरूरत है। सपोज मैं कहूं कि मैंने मास्टरी मैथमेटिक्स किया है और पहले ही दिन क्लास में 11th और 12th में मुझे पढ़ाना है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
और हमको यही नहीं पता हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कब ओरिजिनेट हुआ, वो कौन सी परिस्थिति थी जहां वो कंपल था थिंकर जो फादर ऑफ ज्योमेट्री कहलाता है, उसको चुनौती देते हुए दूसरी धारा का निर्माण किया। एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं करेंगे। इसलिए IUCT की स्थापना की गई। हम जिसको एजुकेशन कहते हैं उस एजुकेशन की समझ हमारे पास कितनी है, और पूरी लड़ाई समझ की है। इसमें आपका भी दोष नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से करिकुलम आपको पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है यही साल भर आपको करना है, उसमें देखिए कहीं गुंजाइश नहीं। इसलिए प्रोफेसर पीएन सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा, प्रश्न को खड़े करना और उस प्रश्न पे रिफ्लेक्ट करना ही उद्देश्य है। वरना रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कोर्स तो हुई है, अभी बाहर चली गई, अभी जेडी भी करा रहा है, जामे भी करा रहा है, ड्यू भी करा रहा है, सब करा रहे हैं। हर दिन एक फोन आएगा कि एक लेक्चर दे दीजिए, वही एक लेक्चर देते रहिए। That's not the purpose. मुझसे पूछेगा तो मैं बिल्कुल कहूंगा, पता नहीं इनके रेमल में क्या लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं है। हालांकि इनके फर्स्ट डायरेक्टर से भी मेरा इंटरेक्शन था, क्योंकि वो ज्वाइंट डायरेक्टर थे पहले NCERT दिल्ली में। कतई आपको ओरिएंट करने का पर्पस नहीं है, कतई आपको रिफ्रेश करने का पर्पस नहीं है। पर्पस सिर्फ ये है कि जो आप करते हैं उस पर प्रश्न खड़े कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या उस पर प्रश्न करना आता है या नहीं आता है। जैसे आप सब इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड से परिचित हैं, सबने पढ़ा हो और पढ़ाते भी होंगे अपने अपने विषय। क्या है दोनों धारा? कोई भी किताब भारत का उलट के देखिए, विदेशों का, क्या लिखा हुआ है? इंडक्टिव मेथड इज अपोजिट टू डिडक्टिव मेथड। आज तक किसी ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है? क्यों? मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल गलत है। I have my own logic. I'll definitely share with you. Why do I say what I say? मतलब हमको समझ में नहीं आता कि क्यों हमने सोचना छोड़ दिया। एक सीधा सा उत्तर होगा कि सिस्टम आपको आजादी नहीं देता है, एकदम सच है, गलत नहीं है। But that's not all. Since that provision is not there in our system itself, so we are not oriented to that. Well, so keeping all these points in mind, quickly I'll go through certain things in the form of, क्योंकि आप कहेंगे कि भाषण बहुत हो गया, कुछ कंक्रीट भी हम जानना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है और क्या है हायर एजुकेशन, isn't it? ये चलता नहीं है। So what I'm going to do, firstly I'll be talking about understanding the context of higher education. First try to understand the phenomenon of education, and while understanding phenomenon of education, we'll try to understand the context of higher education, and as the topic reflects itself, we'll be talking about the global higher education, and then what is needed. So to understand that, what is needed is contextualizing phenomenon of higher education in India from the global perspective, and last but not the least, what kind of things are required on our part, particularly from systemic reform and institutional engagement point of view. Fine, friends? So this is the scheme of my presentation that will go on. Well, should I move ahead? Anything has? देखिए प्रेजेंटेशन बहुत ऐसे अच्छे स्लाइड्स हैं, मुझसे कहीं गुना बेहतर लोग हैं हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन पे बोलने के। मेरा पर्पस कवर करना नहीं है, मैं सिलेबस को कवर करना विश्वास नहीं करता। एक स्लाइड्स काफ़ी है अगर उसकी हमारी समझ बनती है। वेल, अब हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जिसको हम एजुकेशन कहते हैं इन जनरल और हायर एजुकेशन इन पर्टिकुलर, वो है क्या? What is that? You all are educationists, so you will agree with me that educational world is a combination of abstraction and concretization, isn't it? For example,
पंडित मदन मोहन मालवीय को हमने माल्यार्पण किया। क्यों? क्योंकि आज जो लाखों लोगों का, हजारों नहीं लाखों लोगों का चूल्हा जलता है, शिक्षित शिक्षा वो सब तो छोड़ दीजिए, उसके घर का जो चूल्हा जलता है ना, वो इस समर्पित व्यक्ति की वजह से चलता है। उसका नाम है मदन मोहन मालवीय। फक्कर आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं। ठीक, तो कहूंगा एक दिन रखा जाए, टूर रखिए, आप लोग जाके BHU घूम के, सिर्फ घूम के। तो अगर आप लोग गए होंगे शायद, नहीं गए, अच्छा मैं जरूर कहूंगा प्रोसेसिंग। देखिए, क्लास में बैठ के लेक्चर कम, क्लास में बैठ के लेक्चर कम, क्योंकि मेरी पहली विजिट है यहाँ, इसलिए मैं अभी बहुत कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्लास में बैठ के लेक्चर कम, बाहर बैठिए ज्यादा, और बाहर जाइए ज्यादा। कुछ क्लासेस गंगा के घाट पे होना चाहिए, कुछ क्लासेस BHU के मैदान में बैठ के गई, कुछ क्लासेस चले जाइए सारनाथ। बिल्कुल, देखिए जब बुद्ध ने शिक्षा दी होगी, आज हमारे किसी सिलेबस में बीएड के करिकुलम में, ना तो हरियाणा में, ना पंजाब में, ना दिल्ली में, ना उत्तर प्रदेश में बुद्ध की पेडागॉजी क्या थी? नहीं है। जिस देश को हम कहते हैं मेरा भारत महान, किस बात की महान? इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगली बार जब आप NEP के लाइट में सिलेबस को बदलेंगे, तो आप पूरे जोरदार तरीके से कहें कि नहीं, ये सिलेबस ठीक नहीं है, या आपकी समझ अधूरी है। मुझे लोग बच्चा डीन कहते थे, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में मैं डीन बन गया था, आज से 12 साल पहले 2010-11 में। तो हमने कहा कि बोर्ड ऑफ स्टडी जो स्कूल बोर्ड सिलेबस तय नहीं करेगा, सिलेबस तय करेगा टीचर, जो उसको पढ़ाएगा, जो उसके आधार पे एग्जाम लेगा और जो रिजल्ट देगा। पूरी खलबली मच गई, और मैंने जानबूझ के अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज में दिल्ली यूनिवर्सिटी, नीपा और JNU के लोगों को रखा, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी उनको चुनौती देना था। वो महान नहीं जो यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है, आप हमसे किसी भी चीज पे कम नहीं है, सेम क्वालिफिकेशन है हमारे पास, सेम एक्सपोजर है, हो सकता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी कैसा? मेरा एक दोस्त बड़ा अच्छी बात कहता है, एक ही चीज को बार बार कहना कोई एक्सपीरियंस है क्या? कोई व्यक्ति एक ही सिलेबस को 30 साल पहले से पढ़ा रहा है और अभी पढ़ा रहा है, तो हमसे एक्सपीरियंस कहाँ ज्यादा हो गया? उम्र बढ़ी है, तजुर्बा नहीं। उसको एक्सपीरियंस नहीं कहते हैं। एक्सपीरियंस कहते हैं कि क्या एक ही चीज को आपने 30 तरीके से किया? नहीं किया, एक तरीके से नहीं करते। तो हमने इसको चुनौती दी, इस सोच को भारत में। और भारत का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला पहला यूनिवर्सिटी है जिसने टीचर को ये फ्रीडम दिया कि सिलेबस तुम डिसाइड करोगे, अगले 6 महीने में क्या पढ़ाओगे तुम डिसाइड करोगे, तुम ही उसके आधार पर पढ़ाओगे, तुम ही उसके आधार पर एग्जाम दोगे, और तुम ही जो रिजल्ट दोगे यूनिवर्सिटी ठप्पा लगाएगी। तो कुछ लोगों ने कहा चेक कैसे करेंगे? मैंने कहा हम स्टाफ काउंसिल में डिस्कशन करेंगे। भाई DU का एक प्रोफेसर आएगा या IGNOU का आएगा या JNU का आएगा, वो कैसे हमसे ज्यादा काबिल है, हमको समझा दीजिए। हम भी तो DU से ही करेंगे। DU में पढ़ाने वाला हो सकता है DU का प्रोडक्ट ना हो। याद रखिएगा, उस इंस्टीट्यूशन का प्रोडक्ट उस इंस्टीट्यूशन के टीचर से ज्यादा जानता है। तो कुछ दिनों के बाद लोगों ने कहा अरे वो तो क्या कर दिया, क्योंकि हमने स्थापित परंपरा को चुनौती दी। उसी तरीके से जब फाउंडर एंड डीन बना वर्धा, महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा, भारत की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। सर मैं वहाँ पढ़ा हूँ। जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD कहते हैं, देखिए उसकी दुर्दशा का कारण। अब वो पढ़े हैं तो समझते हैं। वो और मानू एक साथ खुला भारत में,
आज मानू का एक्सपेंशन देखिए और आज MGHP वर्धा का एक्सपेंशन देखिए। तो हम क्लास अब ये पढ़े हैं तो ये समझ सकते हैं, गांधी हिल्स पे हम लगाते थे। दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता था तो मैं कहता था अच्छा जब VC ना हो तो मुझे बता देना कि कब क्लास लेनी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, एक साथ 11 रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी। आई वाज हेड एंड डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन, हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, हेड एंड डीन मैनेजमेंट, डीन एकेडमिक्स, डीन प्लानिंग, डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, पूछिए मत। जीवन में कभी नहीं सोचा था इतनी पोजीशंस इस यूनिवर्सिटी में एक साथ वन टाइम पे होल्ड करेंगे। तो टाइम की तो कमी होती भाई, आदमी एक ही समय तो नहीं है। तो गांधी हिल्स पे शाम को कक्षा होगी, लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए, परंपराओं को तोड़ना है और नई सोच के अनुसार अपनी चीजों को बनाना है। अगर गांधी को यह अधिकार था अपने तरीके से शिक्षा की सोच बनाने का, मालवीय को यह अधिकार था, अंबेडकर को था, टैगोर को था, विनोबा भावे को था, तो अरविंद झा को क्यों नहीं? बशर्ते कि मौका मिलना चाहिए। हाँ, आई एम थैंकफुल टू गॉड, मुझे मौका मिला और बहुत मिला। इसलिए नहीं क्लास में केवल बैठ के नहीं होगी। अभी मेरी पहली विजिट है, हम सर से बात करेंगे। लेट्स मेक इट मोर इंटरैक्टिव। पूरा बनारस तो देखिए पहले। आपको पता होगा कि भारत सरकार का जो एम्बलम है अशोक का, है ना, 3 शेर वाला मुंह, कहाँ रखा हुआ है? जाइए देख के आइए, जाइए देख के आइए। एक दिन तो प्रोग्राम होना ही होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? Anyway, don't worry, change will take place. That I assure you. Don't worry. Well, so friends, for me, मैंने क्यों BHU की बात की? सवाल यह है कि BHU क्या है? What is BHU? Is the Vice Chancellor of BHU a BHU? Are the faculty of BHU BHU? Are the students of BHU BHU? Are the research scholars of BHU is BHU? Are the supporting staff including registrar and finance officer? Is the BHU? No. क्या BHU की बिल्डिंग जो आप देखते हैं वो BHU है? तो फिर वो BHU क्या है? और ये बात आपके कॉलेज पे भी लागू होता है, आपके इंस्टीट्यूशन पे भी लागू होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो एजुकेशन का जो वर्ल्ड है, शिक्षा का जो संसार है, वो बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट है, हाईली एब्स्ट्रैक्ट है, जो दिख नहीं सकता है। और जो टीचर या रिसर्चर उसको देख लेता है, वही एजुकेशन समझ सकता है। एंड दैट्स व्हाई आई हैव very clearly written here, the education world is a combination of abstraction and concretization. ये सारी चीजें concretely देखती हैं, लेकिन इसके पीछे जो नहीं देखती हैं, वही तो BHU को BHU बनाता है, वही तो JNU को JNU बनाता है, और वही तो DU को DU बनाता है। Now, education relies on what? Lastly, you'll agree with me that education relies on cognition, emotion, rationality, logicality and creativity. Am I right? देखिए कितनी बड़ी धोखा हमारे साथ है, खासकर मैथमेटिक्स के लोगों ने किया है, साइंस के लोगों ने और फिलॉसफी के लोगों ने। क्या कहा कि इमोशनैलिटी का कोई स्कोप नहीं है रैशनैलिटी के साथ, और जो फिलॉसफी है, जो मैथमेटिक्स है, जो साइंस है, वो रैशनल डिसिप्लिन है। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। आप लोगों ने उसका नाम सुना है क्या? दमासियो का सुना है? बताइए। सर वो प्रेडिक्शंस करते हैं। No, I'm so sorry. I shouldn't have said no, but anyway, no. Anybody else? देखिए, इसलिए मैंने अपना वक्तव्य फ्रांसिस बेकन के स्टेटमेंट से सुना। आप पढ़ते नहीं हैं तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं। और टीचर एजुकेशन की ये सबसे बड़ी विडंबना है, खासकर भारत जैसे देश में, कि हमारी रीडिंग बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। और इसीलिए आप और हम जो बात कहते हैं, वो बिना पढ़े लिखे लोग भी जब वो बात कर देते हैं, तो हमें और आप में कोई अंतर नहीं रहता। हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। IUCT का यही पर्पस है। दमासियो इज ए न्यूरो साइंटिस्ट, उसकी एक फेमस किताब है, जरूर पढ़िएगा कभी मौका मिले, डेकार्टेस एरर।
अब वो बड़ी लंबी चौड़ी है, बड़ी शॉर्ट में मैंने उसको इस तरीके से कंसेप्चुअलाइज किया है, नो रैशनैलिटी जो पॉसिबल विदाउट इमोशनैलिटी एंड नो इमोशनैलिटी जो पॉसिबल विदाउट रैशनैलिटी। अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व है वहाँ मेरा रैशनल माइंड भी इन्वॉल्व है, और मैं अगर रैशनली किसी को कहता हूँ ये सही और गलत है, वहाँ मेरा इमोशंस भी। इसलिए रिसर्च वाले क्या पढ़ाते हैं आपको, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अरे बायसनेस तो उसी समय पैदा हो गया जब हमने डिसाइड कर लिया कि मैं इस पे रिसर्च करूंगा। आज आवश्यकता है, खासकर भारत जैसे देश में, टीचर एजुकेटर्स एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को चुनौती दें। कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िए। न्यूरो साइंटिस्ट जिसका काम था प्योर रैशनली तरीके से माइंड के फंक्शनिंग को करना, और वो ये बात कह रहा है। हाँ, मैंने मतलब पूरी किताब की समरी आपके सामने रखी। So can you repeat the name of the book again? The name of the book is the Descartes' Error. René Descartes है ना, D-E-S-C-A-R-T-S, Descartes' Error. Well, so the essence of education, for me, not lies in cognition, emotion, rationality, logicality, and creativity, but also in aesthetics and intellectual challenge. अगर मैं गणित का शिक्षक हूँ या गणित का छात्र हूँ, तो गणित का सौंदर्य बोध क्या है? क्या है सौंदर्य? पहली बार जामिया ने मुझे मौका दिया था कि गणित के टीचर्स के सामने ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स इन मैथमेटिक्स पर तुम्हें लेक्चर देना है। कल ही इंटरव्यू करते हुए मैंने उस प्रोफेसर से पूछा, ही इज ऑलरेडी प्रोफेसर बट ही वांट्स टू बिकम ए प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या स्पेशलाइजेशन है? मैथमेटिक्स। तो मैंने कहा कि टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, in addition to the mathematical contents that you have learned or you teach, what kind of literature would you like to suggest to your mathematics students so that he or she can form his or her own kind of understanding what mathematics is all about? अब मेरी बातों पे मत जाइए, ये बगल में भारत का बड़ा नामी गामी यूनिवर्सिटी है, नहीं बीएचयू। आप में से होंगे बहुत सारे लोग बीएचयू को पढ़ा, खड़े करिए हाथ करिए, देखिए बड़ा बड़ा है। यही क्वेश्चन लेके एक सर एक सर्वे करने में आया, जितने मैथमेटिक्स के प्रोफेसर यहाँ पढ़ा रहे हैं, पूरे होश में मैं बोल रहा हूँ, आप जाइए उनसे पूछ लीजिए सर, गो एंड आस्क। अगर वो 5 टॉप लिटरेचर का नाम आपको बता दें तो आप समझिएगा कि हाँ, मैं तो मानूंगा कम से कम कि बीएचयू में अभी भी दम है, नहीं है। मुझे याद है, मैं बड़ा अभी शुरुआत ही किया था, 95 रहा होगा, 96 जब कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री का लेसन प्लान बनाया तो मेरे टीचर ने लेसन प्लान को उठा के फेंक दिया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस अरविंद, तुम पहली क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो और तुम पूछोगे नहीं व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने बस मास्टर का रिजल्ट आया भी नहीं, आने ही वाला। अब मैं कैसे कहूँ उस टीचर से, सर ये प्रश्न तो मेरे शिक्षक ने पूरे जीवन में कभी नहीं बताया, अब पढ़ाने के लिए अभी प्रश्न कह रहे हैं तो कहां से मैं जानूंगा? The fact is I don't know what's the right answer to this question. Because nowhere, neither at the undergraduate level nor at the postgraduate level, this question is there in the syllabus. लेकिन उसे एक सीख मिली कि मैं अब मुझे कभी मौका मिलेगा तो यही प्रश्न पूछूंगा। संजोग से मेरा जेआरएफ हुआ और मैं एमफिल कर रहा था, तो मेरे टीचर ने मुझे हाथ पकड़ते हुए मेरे डीन के पास ले गया और कहा कि सुनो, इसका जेआरएफ हो गया, ये पैसा लेगा भारत सरकार का, तो कल से ये पढ़ाएगा। कहा अरे इस बच्चे के लिए तो बड़ा अच्छा है, नीति और पूछ क्या दे रहे हो इसको? कहा मेरा पेपर कल से यही पढ़ाएगा। जोश आता है ना, खासकर आप में से जो लोग यंग हैं। देखो यंग होना अपने आप में बड़ी बात होती है, सच क्या है, वो जब बूढ़े होंगे तब आपको पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा। स्टूडेंट सबसे ज्यादा एसोसिएट करता है यंग लोगों के साथ। Until unless you are different and exceptional, students will not associate with old people. Frankly speaking,
बीइंग यंग वो अपने आप में है। पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड क्लासरूम में मैं एंटर किया, मेरे टीचर मुझे इंट्रोड्यूस कर गए, हो गया इंट्रोडक्शन, सब कुछ हो गया। लय आने में कम से कम 15 दिन लगे। फिर वही आया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाना, हाउ टू टीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैंने कहा कि यार हो सकता है कि मेरी डिग्री जो है कुछ छोटे यूनिवर्सिटी से है, बहुत नामी गामी से नहीं है, जरा दिल्ली विश्वविद्यालय के लोगों से सवाल पूछ के देखते हैं। मैंने यही सवाल पूछा, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड टू माय अटर सरप्राइज देयर वर 60 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स और साइंस दोनों में पढ़ाया जाता है। क्यों? यस सर। क्यों पढ़ा तो जाता है, हाँ ठीक कहा आपने, लेकिन मेरा अगला सवाल होगा क्यों? बिकॉज मैथमेटिक्स ट्रांसेंड्स द डिसिप्लिनरी बाउंड्री ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेस। जो दूसरे डिसिप्लिन में हिम्मत नहीं है, एकदम सच कह रहा हूं और साफ कह रहा हूं। तो टू माय अटर सरप्राइज द एंटायर क्लास वाज स्टैंडिंग। एक लड़का था त्यागी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी जगह का होगा। तो उसने कहा कि सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने कहा या टेल मी। Until unless you ask this question, the examination will never study this such kind of questions in our life. And he was correct. And that's why 1948-49 Radhakrishnan Commission very clearly states the single reform that you want in the field of education, you have to reform the examination system. Read that document carefully. तो मैं कैसे बताता कि सर मुझे खुद नहीं पता है, हम लिखेंगे कैसे लेसन प्लान, ये सवाल। तो पहली बार डेकार्टे का नाम सुना, वो हाथ पकड़ के चल रहा है। क्योंकि हम मैथमेटिक्स बी यानी जो 11th 12th में पढ़ाए जाते हैं वो 4 ही लोग थे, तो बड़ा ही क्लोज इंटरेक्शन होता है। तो चलो लाइब्रेरी चलो, कहा ये सेक्शन में मिलेगा जो मैथमेटिक्स लिटरेचर की तुम्हें समझ देगी। पहली बार लाइफ में समझा टीचर एजुकेशन को अगर हम गंभीर बना देना तो दुनिया का कोई डिसिप्लिन नहीं मुकाबला कर सकता है। बस 2 काम करना है, एक तो सीरियसनेस लानी है और दूसरी स्टडी की लिस्ट को बढ़ा देना है कि आपकी रीडिंग की वेरिएशन लेवल क्या है, किस लेवल तक जाके आप स्टडी करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस एनीवे, एंड ही वाज राइट। इसीलिए मैंने कहा कि आप जाके पूछिए जो यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं कि रेन डेकार्टे की किन किन किताबों को उन्होंने पढ़ा है, लैबनीज के किन किताबों को पढ़ा है, रसल के किस किताब को पढ़ा है, इनवाइटेड के किस किताब को पढ़ा है, कार्ल मार्क्स के गुरु हेगल के किस किताब को पढ़ा है, विटगेनस्टाइन के किताब को कौन पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ता है। क्या पढ़ता है? जो 5 सफेद वाले, मेरे भी बाल सफेद हो गए, दोनों लोग करिए, बाल सफेद हो गए, 5 सफेद बाल वाला व्यक्ति बैठता है। 30 साल पहले जिसने एजुकेशन लिया वो 30 साल बाद के स्टूडेंट का सिलेबस डिसाइड करता है। सोचिए, और हम सब यस करते हैं, और हम मानते हैं कि बोर्ड ऑफ स्टडीज पास करेगा तभी वो सिलेबस मान्य है और स्कूल बोर्ड पास करेगा तभी वो सिलेबस मान्य है। क्यों? I don't understand. So friends, for me, the essence of education lies in intellectual challenge. अगर आपका डिसिप्लिन आपको इंटेलेक्चुअली चैलेंज नहीं कर रहा है, आप समझिए कि आप डिसिप्लिन से दूर चले जा रहे हैं। छोटा सा नमूना आप सुनना चाहेंगे एग्जाम इंटेलेक्चुअल चैलेंज का? I am sorry, I'll give you maximum example from mathematics, right? Because my first discipline is mathematics. आप सब जानते हैं, आप सब लोग 10th तक तो पढ़े ही होंगे, क्या? मैथमेटिक्स, नहीं कम से कम 10th तक। और आप सब में जानते होंगे कि हु इज फादर ऑफ ज्योमेट्री? यूक्लिड। यूक्लिड ने एक किताब लिखी है, कोई नाम बताएगा आपको? उसका नाम है 13 प्रिंसिपल्स। और पहले प्रिंसिपल में वो लिखता है अपनी किताब में व्हाट इज अ पॉइंट, और वो लिखता है पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस ज्योमेट्रिकल फिगर। सेकंड प्रिंसिपल में वो लिखता है व्हाट इज ए लाइन, और लिखता है लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कुछ गड़बड़ी आपको पता चला? इस दोनों स्टेटमेंट में कोई कंट्राडिक्शन पता चला आपको? आई रिपीट,
What is a point? Point is a dimensionless geometrical figure. What is a line? Line is a collection of points. What is the contradiction between the two principles? Yeah, absolutely right. What's your good name, sir? ज्ञानेंद्र जी बिल्कुल सही कहा कि देखिए जिसको आज तक हम पूजते हैं, इसलिए पूजा करना बड़ा खतरनाक होता है कई बार। जिसको आज तक हम पूजते हैं और कहते हैं कि वो फादर ऑफ ज्योमेट्री है, वो कितनी बड़े इलॉजिकल स्टेटमेंट दे रहा है। ज्ञानेंद्र जी ने बताया, मैं तो नहीं कहा कुछ। ज्ञानेंद्र जी ने कहा भी कि एक तरफ कह रहे हो कि पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं है और दूसरे तरफ कह रहे हो कि वही पॉइंट लाइन बना देता है। हमारी और आपकी मोर और लेस यही स्थिति है अपने फील्ड में एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न्ड। किसने चुनौती दिया इसको? डेकार्टे ने। डेकार्टे ने कहा ओ इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। और तब उसने अपने रिफ्लेक्शन को स्टडी के आधार पर क्या कहा है? पॉइंट कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड एंड दैट्स व्हाई इट्स लोकस कैन बी आइडेंटिफाइड। सो पॉइंट पी पैरेंथेसिस x1, y1, मतलब ये कोई पॉइंट है तो x डायमेंशन में x की डिस्टेंस और y डायमेंशन की डिस्टेंस, बस ये बता। और पता है इस फिनोमेना को से क्या हुआ? उसने एक सिस्टम ऑफ थिंकिंग को जन्म दिया। आपको पता है हम थिंकिंग डे किस दिन मनाते हैं? पूरी दुनिया में थिंकिंग डे किसको मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? देखिए हम आप जो काम करने के लिए बने हैं हम उसी से नहीं अवेयर हैं। नोट कर लीजिए 22 फरवरी पूरे दुनिया में थिंकिंग डे सेलिब्रेट करता है। एक दिन इस पे चर्चा कराइए अपने इंस्टीट्यूशन। सोचना क्या है? व्हाट इज थिंकिंग एंड हाउ टू थिंक, व्हाट आर द वेज टू थिंक। एनीवे, तो उसने जो सिस्टम का नाम दिया उसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ थिंकिंग एंड लॉजिक, और पूरा किताब दिया। So similarly, in your field, try to find out what are the classic books that I must read. अगर आपकी रीडिंग की डायमेंशन नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी कहाँ से बनेगी? उस पर भी मैं आऊँगा। देखिए पर्सनालिटी बड़ी अजीब चीज़ है। पर्सनालिटी वो नहीं है जो साइकोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, आप में से अगर किसी को लगता हो कि साइकोलॉजिस्ट से मेरी कोई दुश्मनी है तो ऐसा नहीं है। आज भी भारत में सबसे ज़्यादा एजुकेशन में बिकने वाली किताब जो इंटरनेशनल फेम की है उसमें मेरा नाम चढ़ा हुआ है। पता नहीं आपका नाम जानते ही जानते, उल्फॉक मिश्रा एंड झा, पियर्सन ने छापी है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो डिफाइन करते हैं वो पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सोना तो बड़ी कमाल की चीज है जो सिर्फ आप कैसे दिखते हैं उससे नहीं आ सकता है, सवाल ही नहीं होता है। ओके, एक और चीज जो एजुकेशन की फिनोमेना है वो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ चॉइसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारे अस्तित्व के लिए जो सबसे जरूरी है कि ज्यादा चॉइसेस होनी चाहिए। कितना अच्छा लगा जब हमने कहा कि क्लासरूम में बात होनी चाहिए, क्लास के बाहर होनी चाहिए, फील्ड पे होना चाहिए, नदी के किनारे होना चाहिए या सारनाथ में बैठ के होना चाहिए। क्या किया मैंने चॉइसेस बढ़ा दी क्लासेस की। हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति दिल्ली से आ रहा है या साउथ से आ रहा है, डाउन साउथ से, सबको बिठाइए बस में, पहुंच जाओ सारनाथ, एक डिस्कशन वही होगा। सारनाथ जा रहे हैं, बुद्ध की पवित्र भूमि, तो चर्चा करेंगे कि व्हाट इज बुद्धिस्ट पेडागॉजी, व्हाट इज बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक काम बड़ा अच्छा काम हुआ है, हरियाणा के लोगों को भी कभी पता हो, डीएन तिवारी की इंडियन रियलिज्म। और जब बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी ने न्याय एपिस्टेमोलॉजी को चुनौती दी तो एपिस्टेमोलॉजी का दायरा कई गुना बढ़ गया। और इसलिए हम जैसे लोग पूरे अथॉरिटी के साथ दुनिया में जहां भी मौका मिला, चाहे वो इंग्लैंड हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, वगैरह वगैरह, जहां भी मौका मिला, बहुत अथॉरिटी के साथ कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला साउंड लॉजिकल सिस्टम देने वाला भारत है।
I give you some demonstration in that. Okay, friends. So, few questions for you, right? What is education in general and higher education in particular? तो concretely तो आप कहेंगे BA, MA, MPhil, PhD, या BSc, MSc, MPhil, PhD, या BCom, MCom, MPhil, PhD. Concretely यही कहेंगे ना, ये higher education है. So my question is, what is education in general and higher education in particular, and how can its unique characteristics be accommodated in our life? गणित नौकरी देने के अलावा मेरे जीवन को क्या दिया है? जैसे मैम से मैं पूछता हूँ, मैम आपको मास्टर डिग्री किसमें है? Political science. Political science. So what do you have get? What do you have got in your life out of political science study? How the political science has shaped your discipline? Because one of the definitions of discipline is that every discipline disciplines your mind in a unique way. And that's why it is called discipline. अगर गणित मेरे जीवन को जीने लायक कुछ नहीं देता है, तो गणित गणित थोड़ी है, वो गणित नहीं है. So this is my first question, right? So how can its unique characteristics be accommodated in your life? You have to think about, because I don't know your discipline. Second question, can education be accounted for both as a body of knowledge and a social domain of inquiry? And last but not the least, what is the nature and process of higher education? ऑक्सफोर्ड में कोई व्यक्ति इसके कैंपस में घुस नहीं पाता है. जैसे अभी मेरी इच्छा हो, चलिए मैं तो प्रोफेसर हूँ, किसी आम व्यक्ति की भी इच्छा होगी जरा बीएचयू घुमाते हैं चला जाएगा. इंग्लैंड में ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति उसके कैंपस में नहीं चला जाएगा, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज. नो, मुझे ऑक्सफोर्ड के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के प्रोफेसर से बातचीत करनी थी तो 3 दिन पहले टाइम लेना पड़ा. Because he was busy. तो वो जो हायर एजुकेशन की पूरी प्रोसेस है जो दिखती नहीं है, वो है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन. Because you all belong to most of teacher education में करते हैं या दूसरे डिसिप्लिन के भी लोग हैं? Oh, good. So how do education? I always believe that टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई काम करे तो केवल टीचर एजुकेशन के लोग नहीं होने चाहिए. इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी बहुत जरूरी है. शायद पॉलिटिकल साइंस के लोग, जो आपका है ना डिसिप्लिन, वो बहुत अच्छे तरीके से बता पाएगा कि एजुकेशन एज ए पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या होता है. और अगर आप हेनरी ज़ूरो को पढ़ेंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा हेनरी ज़ूरो, वो कहता ही है एजुकेशन इज अ पॉलिटिकल एक्ट, और सच में एजुकेशन पॉलिटिकल एक्ट है. एंड आई आल्सो एग्री विद दैट. इट्स अ प्योरली पॉलिटिकल एक्ट. सो हाउ डू एजुकेशनिस्ट्स वर्क एंड क्रिएट न्यू एजुकेशनल नॉलेज? व्हाट आर द मेथड्स, एस्थेटिक्स एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन? And next question, is landscape of education in general and higher education in particular changing as in new methods and disruptive technologies emerge? What is disruptive technology? What is disruptive technology? अरे जिसको आप ICT कहते हैं वही disruptive technology है. जो ट्रेडिशनल वे को डिसरप्ट कर दे वही disruptive technology कहलाता है. And last, how does education relate to society and culture? Even जो गणितीय मूल्य है ना, वो कल्चरल वैल्यू है. एक छोटा सा रिग्रेट आपसे शेयर करूंगा. एक छोटा सा काम हम लोगों ने NCERT में किया था, उसमें मैं रिवाइड किया, और वो ये किया था कि जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आ गया, इसमें ऐसा कोई नहीं है ना जो हिंदी नहीं समझता हो. Is there anyone? Is there anyone? So I cannot understand fully. But you can understand. Yes. Yeah, if you find that certain things when I'm speaking Hindi, it's not. It's beyond your comprehension. I'll try to explain in English. तो हम लोगों ने एक छोटा सा काम किया था. तो उस काम को मुझे लगा ये बड़ा यूनिक काम है, इसको जरा दुनिया को बताया था. तो मैंने एक छोटा सा पेपर लिखा और यूनिवर्सिटी ऑफ रिवरसाइड कैलिफोर्निया को भेज दिया. उन्होंने इनवाइट किया अपने कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देने के लिए. तो भारतीयों की तो आदत है ना थोड़ा फैलने की, नहीं? आप फैलना भी चाहिए.
You should be proud of your culture. You should be proud of your nation. You should be proud of your entire collective historical consciousness. And I am. And each one of you should be. So मैंने कहा, I come from the land which has given the concept of zero to the world. चेक कर रहा था कोई अमेरिका का प्रोफेसर. I was standing here. वहाँ बड़ा विचित्र समस्या है. वहाँ 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया गया, 1 घंटे का, तो आधा घंटा ही आप बोलेंगे. आधा घंटा ऑडियंस का टाइम है, आपका नहीं. जितना टाइम दिया गया उसका 50% ऑडियंस का टाइम है. हमारे यहाँ टाइम की ही कमी है. आप जानते हैं टीचर एजुकेशन के सेमिनार में क्या होता है, बाकी सेमिनार में भी क्या होता है? नहीं, 1 घंटा में 20 लोग बोल लेते हैं. अब सोचिए हम कितना मजाक करते हैं, और उस मजाक का पार्ट हम बनने चाहते हैं क्योंकि एपीआई बनाना है.